Thank you, Radhi bhai. First of all, you see that I am reminded of Winston Churchill, who said that democracy is the worst form of government, except all other forms that have been tried from time to time. When we see the development of democracy, first of all, you see that there were three reactionary institutions during the Dark Age in Europe. That was the papacy, and then the monarchy, and then the feudal lords. So these three institutions were responsible for stifling the voices of the people. There was no space for general masses. So under those circumstances, you see the democratic movement that was built up thanks to Renaissance, then Reformation, then Enlightenment. And this is the reason that you will find most of the theories, they say that democracy is an Enlightenment project. But what has happened, you see that the first thing that we find in a democratic project is that there is a trust or faith in the rationality of man. Then man is a rational creature, or he or she can know what is good and what is bad for him or her. And nobody should be there to tell people, so long as they are not harming others, that what to do and what not to do. So that is what we call individual freedom become the cardinal, foundational pillar of democracy everywhere. So democracy cannot be visualized without granting what is called individual freedom or the freedom of conscience. But there is one problem with this democratic project. Democracy overemphasizes what we call individual freedom without taking into cognizance the collective rights. So that dichotomy, the conflict between individual rights and collective rights, that is one thing that the liberal democratic project has not been able to resolve. Of course, new theorists like Wilkie Mlika and Viku Parekh, they are coming up and they are saying that the issue of multiculturalism is very, very important, especially when we are talking about the diasporas in the different countries of the West. But at the same time, you'll find in democracy there is, the principle of non-discrimination and equality that is emphasized. And when we say that principle of the non-discrimination in democracy is, equality is something that should be there, it means there cannot be a special safeguards, or there cannot be, a special care for the vulnerable groups in the society. And that is problematic for most of the liberal democratic projects in all over the world. Basically, the moment you try to do something, that is called, there are people who are unequals. So the equality can be among equals and inequality among unequals. That is the principle of equality that we have to understand. So this is the reason that we will find that who are minority, first of all, we have to understand. And if we see the definition of authority, which has been adopted, of course, by the United Nations, basically, when we say that who is a minority, there are four important factors or the component that we have to take into account. First of all, numerical inferiority. Numerically inferior group will be recognized as a minority. There must be non-dominant position. They must be distinct from the majority. And the last one that is very important, and that is there must be a will to preserve their distinctiveness. What Shadia Ilmi was saying right now, that you see the identity, for example. Identity is something that is, that the separate identity should not be there, homogenization should be there, so this one people, one culture, one nation, that is a very dangerous project that always ends up that is a dangerous project. It becomes fascism. It promotes what is called majoritarianism, where we are trying to make a state a bulldozer. And we are trying to say that the state should bulldoze all identities. And it should make, it should become a melting pot. So ultimately what will happen that, when we are trying to bulldoze all identities, means the distinctiveness that we have, but the diversity that we have, that will not be segregated, that will not be tolerated. Rather, in the name of one nation, one people, one culture, what will happen that there will be cultural homogenization. No other identities. And that will promote what is called majoritarianism. Keeping in view, the theoretical aspects, the two important thinkers from the liberal democratic project we should take into account. Number one is John Locke, who is, of course, father of contemporary liberalism. He says that you see that there are three important rights, and they are, for example, right to life, right to liberty, and right to property. And these rights cannot be taken away by the state.
He said that the state comes into existence only for the protection of these three important rights. And if these rights, that is right to life, right to liberty, right to property, that is state, ESTAT, if that is taken away, it means people have a right to revolt. That is why, he becomes a revolutionary political philosopher. And then John Stuart Mill, who says that it is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied. It is better to be a Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And then he is saying that there is always a danger of tyranny of majority in democracy. And that temptation of majority to impose its ideas, its values upon the minority, that is something which is a very dangerous trend. And he is warning that if, tyranny of majority established in democracy, it means that is not a true democracy, that will be a false democracy. Today, we are living in the largest electoral democracy in the world. But the question is, qualitatively, if we are going to judge on the basis of what John Stuart Mill, who is a great liberal political thinker, that whether it is a true democracy or false democracy. This trend is, they are all over the world, the right-wing forces are rising, and ultimately the very rights that have been granted by the democratic society, by the democratic state, those rights are being manipulated to the advantage of the majoritarian ideology. And because of that, what is happening that the minorities are facing all kind of threats. There is no doubt in it. Minorities are facing threats everywhere. You see, for example, I was going through a data and I find that in the United States of America, the Afro-American community, that is black community, that, they are 14% in number, but their representation in jail is around 30%. Same is the case in India. The Muslims are around 14%, but their representation in jails in India is 30%. So ultimately, if this kind of thing is happening, in jobs, you will find, for example, the public employment, you will find their number is less, but in the jails, they are higher in number. Again, the other things, we are also talking about the vulnerabilities of minorities, rights of minorities. Now, what are the responsibilities of minorities? I know that the Tista Sakrwa was pointing out that within community there are voices, and these voices of dissent, they should be respected. You cannot justify, for example, a particular political body or a particular religious body from our community, for example, Muslim community, saying that there should not be what we call abolition of child labor, abolition of Child Marriage Act. They are calling for abolition of Child Marriage Act. How can you justify the abolition of means? What do you want? You want that a 9-year-old girl should marry. She should be allowed to marry because she's a Muslim. So where is that responsibility? That we have to understand. And in the secular space, especially when we are going to interact with others, we have to keep in mind the same project that I started, that the trust in the rationality of man. The trust that every individual, so long as he or she is not harming others, what John Stuart Mill says, other regarding action. In the self-regarding action, she or he should be allowed to do whatever she or he wants. And here comes the justification for what we call the rights of sexual minorities as well. So, these are the points that the minority community also has to understand. And last point that I will mention here, especially in the case of the Muslim community, that you will find that the fiqh that was developed in the Muslim society and the fiqh that we are following, the different schools of thought, most of those things developed in the countries where Muslims were living as majority, and they were also ruling. Now, there must be, there are doors of ijma and ijtihad in the community and the qiyas. On the basis of that, the minority jurisprudence, or how a Muslim should live as a minority in a country that is being dominated by other communities, that is also something that should be pondered over by the Muslim community. Razi Bhai will say that you are trying to bring religion into this democratic secular space, but keep in mind that the Muslim society especially cannot be reformed without understanding the normative value of Islam, and that is why I'm trying to invoke this particular point. And lastly, you see that
what we should remember that these days there is a fashion that we talk of, this is the last point, Ravi bhai, that we talk of this political party and that political party, that BJP did that and Congress did that. But the point is how a particular state, like Indian state, is dealing with the minorities. It is not the particular political party, it is not the particular political, it is not the particular group. But what is the responsibility of the state? How a state is dealing with the minority, whether it is 1984 anti-Sikh riot, or whether it is 2002 Gujarat, or whether it is recent Delhi riots. We cannot say that Congress did it and the Samajwadi did that, or Muzaffarnagar the kind of Samajwadi party. The basic question is, where is the responsibility of the state and the apparatuses of the state? Why police, for example, Sri Krishna Commission report, I quote from there, a police inspector is saying that when a helpless woman is calling that I need help, and he says, and I quote from Sri Krishna Commission report, that if a Muslim is killed, one Muslim will be less, unquote. Why this kind of attitude? The most visible manifestation of a state is police, and during the communal riots, it becomes very difficult to get protection from this most visible manifestation. Thank you very much. Mohib Saab, very well said. But the only one question I am going to raise is what Tista said, is that we are talking all about the abuse of the government on minorities, but minorities realizing this, that governments have been very abusive and at least not very conducive to their health or interests. Why Muslim community themselves never take any step to improve their educational, their political, their social structure? I mean, take, for example, your institution, our Alig1 Muslim University, largest campus in the country, probably the best place housing all the Muslim intellectuals. There is not a single movement coming from Alig1 Muslim University on any educational, social, political activism at all. No articles written from their intellectuals, no mass contacts, nothing. Maybe Jamia has done a little better in that sense, but why there was no effort from the community itself? Unless their majority sees you as active, actively engaged in this process, they will consider you that these guys just want some kind of help and that's it. They themselves are not getting all this, trying to do anything. What is the answer for that? Okay, Razibhai, that's a very good question, but let me first of all make it clear that if you go through the Sacha Committee report, one thing that you will find about the Muslim community, and that people hardly highlight, that, when all the socio-religious groups that were studied by the Sacha Committee, it was found that the Muslims, as a socio-religious group, if you see, they are the people, the highest number of self-employed people, they are from the Muslim community. But they are self-employed. Without the help of the state, most of these people are self-employed. Number two, about Alig1 Muslim University, Razida, you should know that it is among the top 5 universities of India, according to most of the rankings that have been done. Among the top 5 universities of the country, you must know. And sorry, you got the question totally wrong. I'm not talking about the quality of education at Alig1 Muslim University. I'm not talking about the self. No. I'm talking about, give that answer as a political scientist. What is the rationale about this, that the minority community, knowing very well that the governments have really abused them, why they themselves couldn't rise above this thing and created a space for themselves politically, socially, and otherwise on all that? Don't talk about the number of papers and articles, things. Why, as a leader, why you couldn't come up? Or any of the institutions, Muslim institutions? No, Razi bhai, I will say one thing that, when we are talking about Alig1 Muslim University, why we have not been able to. First of all, we should not underestimate the power of the state. One thing that you should, we all must accept this, that discrimination, marginalization, social exclusion, that is something which is very much inherent in the society.
Number two, about the Muslim community, when you are talking about why they are so backward, and most of the time people give example of the Sikh community. One thing we must remember that the baggage of history is there with the Muslim community. They are basically held responsible for partition of the country. The hostility that they face when they are even going for the public, private jobs, and what kind of question that are asked to the students, those who are going to those spaces. And thirdly, the very power of the state, when that is being, all the apparatuses of the state that is being, used for othering a particular community. Not only othering a particular community, but projecting that community as internal threat. That ideological discourse, if that is developed, you can understand that, it becomes very difficult for a community which is marginalized right from 1857 to 2022, which has been facing all kind of problems. For example, in post-partition India, you'll find frequent communal riots, thousands of communal riots in this country, where one Muslim after 2-3 generations he is struggling and coming up to do something, and after that one fine morning he finds he is nowhere. So ultimately, that discrimination, that marginalization, or the social exclusion that has been done systematically, the structural inequality in the society, that should be also understood. At the same time, you see that a kind of revolution you will find in the community. Girls' education especially, you see how Muslim girls are doing so well in education, going to schools and colleges, and you see that they are trying to seek admission, and even the institutions that are not available for them. For example, you see that there are institutions where they should have their own spaces, and the thousands of schools, colleges, and madrasas that the Muslims are running. Keep in mind, it's a downtrodden community in comparison to even scheduled caste, scheduled tribes. So, जब आप social religious groups की study कीजिएगा, तो you have to see comparatively how many institutions have been established by different other communities and how many institutions, education institutions, have been established by Muslims in this country. आप देखेंगे chain है, and by that way they have tried to maintain their own identity, they have tried to preserve their own identity, they have tried to preserve their own culture and tradition, and that is something that should be appreciated. All so right. Yeah, we got it. So let's stop. Can I add something here? Can I just say something here to this question, please? I just like to say something. I fully empathize and agree with what Mohib Saab is saying to a large extent, but I think one thing, Mohib Saab, which we probably ignore as the more privileged sections of society is the class and caste dimension among Muslims. And I think that, is also responsible for some of the issues that I think Razi Saab was talking about. I think there is been a kind of a blind eye turned to the entire Pasmanda working class section of Muslims, who are the same people you say who are self-made, who are employed themselves, etc. And I think because of this entire non-recognition of that larger section, a whole lot of creativity and creative ideas have not been able to come to the fore. That is my feeling also. I mean, I just like to humbly suggest that, because some of the institutions we are talking about, of course, they're very admirable, what all they've done. They're very good in terms of academic excellence, but they could have opened the social structures in a more democratic way, which I think maybe has not happened. Yeah, I think Mohib became very defensive about what we have done. Yes, you have done enough enormous things in India, but really we have to do far, far more better than that on social reform and activism and all those things. Let's stop here. Faisal, just show the next week's announcement, and then Dr. Rafat Hussain will take over as a moderator for the audience. Okay. Faisal, are you there? So, Rafat, Faisal, are you there? Please just show the announcements for the next week, and then Rafat will do the rest. And next week, we are going to have a very good combination of scholars
two iconic families coming together. That was an idea given to me from Ashish Tripathi, a senior journalist from Times of India, that we should bring grandchildren and children of Mahatma Gandhi and Netaji together deliberately, because BJP these days are trying to, they are trying to own Netaji, that, he was a dissenter and didn't like the Congress. That was totally untrue. So anyways, Professor Sugata Bose from Harvard, who is a grandnephew, and Professor Anita Puff from Germany, who is a daughter of Netaji, and of course, Professor Rajmohan Gandhi, grandson of Mahatma Gandhi. They are together in coming week, and they will talk about Indian national and Hindu nationalism, lessons from Gandhiji and Netaji. And is another announcement is for tomorrow, which is unrelated. Unrelated in the sense that it is not a regular part of this Indian diaspora. Many people are discussing since a couple of weeks or rather a month on Alig1 forum about the proposal for establishing a coaching guidance information center. And so everyone is welcome. Same Zoom link, same time tomorrow. Thank you very much. And now over to Dr. Rafat Hussain, who will be moderating this section. Rafat. Thank you, Rajibai, and thank you, everyone. Thank you, Professor Haque. Thank you, Shazia Ilmi and Tistat Setalwat. So it was an interesting day today. And so the session is open for the question and answer. There are a lot of questions in the chat box, but those were most likely they were for Ms. Ilmi. So if you have interest to ask a question to these two speakers, please show your interest in the chat box or raise your digital hand. So let me begin with, okay, so Rudranshu Singh and Tariq Farooqi, because I don't know, these hands were raised long time back, whether they really want to ask the question now. So Rudranshu, please go ahead. Sir, my question was also for Ms. Shazia Ilmi, but she delivered a monologue and vanished, to my horror. Now my question is to Madam Tista Sitalwarji, that you have seen the court cases in Gujarat. Why the BJP goons or the individual who happens to be the Prime Minister of this country wasn't being prosecuted for what was done in 2002? Where was the pitfall? Well, I can only say, Rudranshu, that it was not for want of trying. I don't know if you have any idea about the kind of battle that the CJP has put up. Apart from fighting the 68 cases of the individual trials, we pursued what we call is the mother of all cases, which is the Zakia Jafri and CJP case. And in between October 5 and December 10, 2021, just 2 months ago, there were everyday final arguments for 5 hours a day made in the Supreme Court, just simply to urge that the kind of evidence collected by us as a citizens group backing Zakia Appa are enough to have a charge sheet against major perpetrators. So the effort has been made sincerely at great human cost to us and to our organization. The lacunae is in the system. I mean, if you have a system which is tottering, if you have a definition of democracy which is just an electoral democracy and does not take the constitutionalism seriously, then even the Election Commission and the judiciary are targets. And there is a certain reluctance in our country, political and judicial, to actually prosecute powerful perpetrators. Look at the history of, say, the 1984 anti-Sikh pogrom. Look at the Nelly massacre. Even today, the victims of the Nelly massacre in Assam, which nobody talks about. 18th of February, 1983, 2,500 Muslims slaughtered in 5 hours and at least 5,000 over the period of 4 days. Bengali speaking, very poor working class Muslims and other minorities, largely Muslim. There were no prosecutions. We've not had prosecutions for major targeted crimes in this country.
because there is an institutional reluctance to prosecute. The state is a prosecutor in this country, and we fought very hard in the Gujarat cases to get victims and complainants to also prosecute cases. So we managed a small amendment in the criminal law, so today victims can also take perpetrators to court. But it's an uphill battle. Tardiness of the courts, delay in cases, lack of independence of investigation, lack of independence of prosecution, judicial delays, lack of time-bound trials, all of these contribute, apart from an institutional reluctance, stroke bias, to prosecute the guilty. Thank you. Okay, Tarak Bhai, do you want to ask question or it was for? No. I had an earlier question. Thank you very much for Shazia Ilmi, but she manipulated us all and showed what a true politician in India looks like these days. Yep. But I do have a follow-up question with these two people. Regarding the recent elections, and they are in India, they can give us a better, a review of what has happened, in spite of the fact that all the signs were towards massive victory for the Samajwadi Party in UP and other places. The opposition was supposed to do better, but BJP prevailed anyway, in spite of massive misgovernance and all the other things that had gone on in the last few years. So what happened? Okay, that's a very big question. So please be brief, because I know there are different opinions about that. But let's hear from the No, speaker. not our opinion. We already. Mohibul, would you like to go first? No, Tista, you should go first. Thank you, sir. So I sort of briefly referred to this earlier, and I'd like to repeat that, yes, there's no question that there is a victory for the BJP. They've got close to 42% of the vote. The Samajwadi Party is 80 seats up, but has narrowly lost in 60. So whether that could have been close to winning or not, if the Election Commission had functioned really impartially as it's supposed to do, is a question up for grabs. It's an academic question now because the results are out. But what I would like to say, and I'd like to repeat, that in the 9 to 10%, not 6% difference between the BJP vote and the Samajwadi vote is a challenge. It's a challenge for any party and any formation, and as citizens for all of us, because it basically means that earlier, I'm talking about pre-2014, we would say that the traditional BJP vote was something like 22%. And what has happened with these Modi Amit Shah's rise is that traditional vote has gone up to 32%. And then it's plus 32 to all the rest that they get, which is a formidable equation demanded. I personally have never been under any illusion that their victory has had to do with anything but the kind of extremely targeted and hatred that they have managed to legitimize, just like Advani had legitimized it earlier, 22 years earlier during the Rath Yatra, when the BJP rose from 2 to 89 seats. Having said that, I'd like to keep emphasizing that the fact that there is a 59% of vote which is not with them is something that needs to give us hope. We need to work with that. We need to look at that. And I think, coming to your point, Tariq Saab, that the Samajwadi look like it's winning, all of us hope. But I mean, for many of us, till 4 months ago, I really was not sure of it. We were almost sure that Adityanath is coming back. And the reason why we felt that is because till about 3.5 months before, you did not see opposition activity at all. There was no political activity and all. And I honestly believe that is the issue. Having accepted communalism and hatred, I'm not denying that. But I think a political party needs to be taken seriously. And you had, over the periods of 4.5 years, so many issues, including minority exclusion issues, which the party should have agitated on the streets, in dharnas, the COVID deaths issue, so many issues. But if you're not available to people when they are in deep distress, then I feel a certain credibility and seriousness in the electorate goes away. And of course, you have the BJP, which has money power, muscle power, and a formidable election machine. I'm also under no illusion that the fact that Mayawati has a 12% vote and also played a certain kind of role by fielding Muslim candidates and all, played a role, that Mr. Owaisi
also played a role. But I honestly speaking, I'm tired of blaming only Mr. Owaisi and Ms. Mayawati for this. The responsibility is on the largest opposition party. I think in 2017, it was Akhilesh and Congress that had come together, if I'm not mistaken, Mohib Saab, in 2017. In 2019, it was Akhilesh and BSP that came together. I don't understand why they don't take these alliances seriously. I don't think we can be talking about defeating a behemoth like the BJP without a practical opposition alliance. Once election comes, they talk about their own seats and own party, own dukan. And I think that is really something we need to put pressure on them about. Because otherwise you're taking people for granted and you're creating a lot of hopelessness, particularly on the most vulnerable section, which is India's poor and India's minorities. Thank you. Very well said. So, Mohib Saab, you want to add something? Yeah. There are many factors, and Tista has already highlighted. The most important factor that I will take into account is, you see that Mayawati had got 22% vote in the last assembly election, before this 2022. Now it has been reduced to 12%. Where this 10% vote has gone, that we have to see. And most of the psephologists and people who study political behavior, they say that most of these votes have gone to BJP. And that is a very significant factor that we have to take into account. Any formidable coalition against BJP will not succeed without taking into account that Dalits are the co-sufferers. So all the co-sufferers of the system, they have to come together. Neither Chandrasekhar was accommodated nor Mayawati was accommodated in the alliance. And of course, Mayawati played a very important role in the victory of BJP, that we know. But you see that a coalition, especially in UP, where the Muslims and Dalits, they together form more than 40% of the population. And you see, you have to accept the social reality in our country. Caste is a social reality. Community is a social reality. Patriarchy is a social reality, for example. So these social realities cannot be ignored. So this is the most important factor in 2024 when they are going for election. You have to see the various states where you have to make very smart kind of alliance. And if you're not going to have this kind of alliance, please again 60 to 70 seats that have been lost because why? Dalits were not included in this particular coalition. Otherwise, the result would have been very different. Thank you. So Dalip Saab is the next, and then Hassan Qiyas Saab. Dalip Saab, please go ahead. Dalip Saab. Dalip. No, then move on to Hassan. Dalit Neem Okay. Saab. Hassan Qiyas Saab, we will come back to Yeah, thank you very much, for giving me an opportunity. My regards to all the participants. I have already raised very pertinent and important questions in the chat box. If you could kindly go through them, you see, basically they are for Madam Shitalwad and Professor Mohibul Haque. These questions are very, very relevant, and we have to have an understanding of these. I, as a Dalit activist, strongly feel that unless until the Muslim and the Dalit masses come together, nothing is going to happen. Leadership will come and go, leaders will come and go. Mayawati will come and she will perish. But what about the masses? We have to understand the difficulties of the masses. Today, the present government is thinking in terms of Hindu Rashtra. But what about a Bahujan Rashtra, which is a majority Rashtra? Have we raised such questions? We are blaming whether it is Akhilesh, SP or BSP or whatever it is. But are we addressing those facts? Are we talking in terms of what is the correlation between casteism and communalism? Are we addressing that? What is the relation between religion and communalism? Are we addressing that? No, we are not addressing that. Those are the questions which should be answered and hammered into the minds and souls of our people. Otherwise, nothing will work. Thank you very much for listening to me and giving an ear to me. Dalit Saab is Ambedkarite, and he's also an activist. He's always, most of the time, you will find him on ground, always talking to people, trying to bring people together. Thank you, Dalit Saab, for beautiful observation. No, I fully agree with you, Dalip Saab. In fact, I've been always saying, that is why I've been telling people
for the last one, that there's no point either criticizing Ms. Mayawati or criticizing even Owaisi Saab, frankly speaking. If we build up a social cohesion at the local level of people working on a program, then eventually leaders will have to fall in line. But the point is that if we don't do that and then we expect this jugaad to take place at the top, it's not going to happen, because I think that moral fiber in the political class is not there. Okay, they have to see it as a response to work on the ground. And therefore the challenge is for us that why are we not, I mean, we are trying, some of us are trying very hard, but I think we need to do it more, that we need to work on social cohesion programs at the local level. Now, for instance, I'll give you an example. We did a 9-month exercise of a fact-finding, really intensive survey into the weaving community, okay, in Purvanchal, which is covers about 9 districts, where I'm sure you know already, the Muslim community, Dalit and the OBC are involved in this activity. And that artisanal industry is being finished, okay. We did a huge survey. The effort has brought people together. Now we have to take that forward programmatically in terms of advocacy, because the livelihood has gone. People are working together. People are producing these skills together and products together. But eventually we have to devise a social program out of it, a social political program out of it. So I cannot agree with you more. The question is, I think more and more activists need to see this on the ground, because I'm a little tired of, blaming this group or that group, and then you sit on Twitter and then you blame people. It really is not going to work. I mean, I was arguing with somebody even about Owaisi Saab. I mean, I don't like his, personally, I don't relate to his politics, but that's not the point. No Muslim would go there. No Muslim would go there if they found reassurance among the Samajwadi Party and the secular parties, if they felt there. The reason why there's a resonance of this is because there's a failure somewhere else. Thank you very much for giving a response. My only request, humble request, is that the Dalits have failed to lead. I'm not talking about the Dalit, leaders, but Dalits as such, the intellectuals have failed to lead. Now, my humble request is to our Muslim intellectual brethren to come ahead and lead from front. All right. Otherwise, we are going to be in big soup. Thank you. Thank you. Okay, Hassan Ghiyas Saab. Unmute yourself, please. Yeah, thank you. I wouldn't have edified Shazia Ilmi with a question, but I do have a question for Tista and one for Professor Haque. The Muslims of India today are not just untouchables, they are unspeakables. No opposition party, in spite of the fact that some of them gained from their support in the elections, would even dare to take their name, let alone anything else, for fear of a backlash. Now, this is not going to change by itself. My question is, how should the Indian Muslims strategize their political approach to become more relevant in the political spaces? And my question to Professor Haque is that we all talk about reforms within the community and we feel the need for it. But where will the impetus for such reform come from? How is it going to happen? So these are my 2 questions. I think because that first question was put to me, I just like to say with a sense of great humility that I feel there's a huge ask that all of us Indians are giving to the Indian Muslim today. A huge ask, ASK. And that ask is that you retain your faith in India, in the society, in the system, and you continue to work with those individuals, few as they may be, far as between as they may be, among other communities, particularly majority, whatever we call it, majority, Dalit, the non-Muslim community, to forge social issues and social and human rights demands. Okay, that is the only political answer, I feel, because that will eventually emerge into a political solution. It means the Muslim will have to, it's a very painful thing. This ask is a very painful ask, because you're asking them to
ignore the daily intimidation, humiliation, and like you yourself said, the being rendered unspeakable and invisibilized, which is a humiliating experience. But I have had the fortune of working with people even now who find the grit to do that. They do it. They've not given up because you can't afford to give up if you're living here. You don't have the luxury. It's not because of principle. You don't have the luxury. So the big ask I say is that you keep forging, chipping away and forging these alliances with because I think it's only comprehensive interventions that will work. The moment you work only as the Muslim community or only as the Hindu community, there will be a label. So we need to constantly work towards socially cohesive interventions. Unashamedly saying that we are working for Muslim rights, Muslim human rights, but let the intervention be cohesive. Let the presence be cohesive, And that is what one is attempting. So right from socio-economic rights, political rights, and I think most important, security. I mean, can you imagine a country which is using bulldozer as a metaphor of victory in their victory matches? I mean, I've got about 20 videos now from across districts in UP where the local representatives of the BJP are using bulldozer in their victory procession. What is the message you're sending? You're sending a hugely intimidating message. So the task and the ask is huge. But I mean, if we don't retain our faith in delivering it, I think we won't be able to do anything, sir. Thank you. Professor Haque? I'll try to answer your question. Of course, it is very difficult to answer this kind of question. But you see, what I find that there is a huge gap between the people coming from, who are considered as people coming from the modern education background and the people coming from the clergy, which have, very important influence on the masses of the Muslim community. They have, Juma, Khutbah and all. This kind of, you will find whenever we try, means when the community tries some kind of reform, you will find that the reactionary elements within the community try to legitimize that is stumbling block they put in on the basis of Islam. Dr. Sayyid also faced the same thing. Dr. Sayyid also faced the same challenge. And that challenge continues today. What I find, the change that today you'll find that the ulama, especially coming from the different, great madrasas like Deoband and Nadwa and other madrasas, they themselves want that there should be a better understanding between the intellectuals of the Muslim community and the clergy. Those, of course, they have the control over the masses. So ultimately, if that gap is bridged, and that, for example, Alig1 Muslim University is doing one thing that you all must be knowing about the bridge course, where the people coming from madrasa, they are given 2 years training and education in computer and English and sciences, and after that they go to different other courses in the country, from our university and from other universities you will find. This kind of steps that are being taken, these are very important. Number two, I have found what that the Muslim community is trying to say that educational institutions are to be established. A lot of educational institutions, that is the only panacea. And I will disagree, with this. Education, enough, education, we have many educational institutions. The question is protecting your constitutional rights. Means we have Alig1 Muslim University seeking the protection of constitutional right, that is Article 30, Clause 1. Alig1 Muslim University established by the Muslims of India. Jamia Millia Islamia established by Muslims of India, and that is why they have a right to administer. But these institutions like Alig1 Muslim University, like Jamia Millia Islamia, like Shibli Inter College, many other universities and colleges, they are facing existential threat. Then what? For example, if the government of India has already given an affidavit that these are not minority institutions. So what will happen? You will have the same percentage of the students in the institutions like Alig1 and Jamia and other institutions as they are in JNU or BHU, and then the people. Please conclude. Just a very quick. Hassan Saab, please leave it because there are. Okay, all right. Okay. Thank you, and Arsha Sayyasa.
Yeah, first let me just thank Asad, you can come back later in a chat and then we will talk about that, what you want to ask. Okay, Arsha Sayyed Saab. Thank you. First, thanks to Tista, and I think we're all indebted to the work that you're doing and others like you, without which I think it would be very difficult to kind of, and the courage that you're displaying in terms of, the work you do and the backlash that you endure. I can't imagine people doing that. So thanks for that. Maybe, I think from the discussion, what I'm picking up, maybe two or three things in the question. One, as I understand, this is not a struggle just about minorities. It's not just about Dalits. It's a broader struggle, really about the soul of India, which is, liberalism. And if you look at that and you look at a broader picture of what's happening across the world, which is essentially authoritarianism, populism, nationalism, sectarianism, this is not just in India. It's happening across the world. And if you take that lens, then you begin to realize that I think the answer that we're trying to put forward for these solutions are perhaps band-aids or things that are pretty short-term oriented. And therefore, what is the long-term kind of approach to kind of dealing with some of the erosion that you're finding in the institutions of India? It's not about, I think, the politician or one state or the other state, which I do think are actually symptomatic or symptoms, if you will, of what's going on. But there's a larger, I think, struggle about where does India end up in terms of human rights, in terms of security, in terms of its own constitution, and what role does it take place in the global arena? I think so. Maybe that's a little bit of a higher level question. And then, practically speaking, what can people sitting in the US do? Because we are here. What can you do to kind of help and support the work that's going on there? Let me stop there. Thank you. You see, there's no question that what you say is correct, that the fundamental issue is not just the soul of India, but I think the foundations that this country was laid on, which is that despite and in spite the horrors of partition, the wisdom that was shown by the diverse political leadership that we remain a constitutional republic and that our citizenship is based on composite and equality and non-discrimination and not religion or caste or gender-based. I think that was a very, very important thing that we are fighting today. Now, the point is, I don't really think, Sir Arshad Bhai, that we are talking about short-term band-aids over here. When you're talking about programs for social cohesion, I think that is what has vanished. Which is the only organization today that is working at the social level? It is either the Rashtriya Swayam Sevak Sangh or the Vanvasi Kalyan Ashram. And they are funded, they are organized, they've got that one direction, which is to convert India into a theocratic state, etc. But where is the counter? At one point, you had the Rashtriya Seva Dal, you had the left cadres, you had IPTA, you had a host of such formations, left to center, which actually were the bulwark of this. Okay, now those have all gone. Let's forget the august institutions for now, like the Election Commission and the Supreme. It's the society and the individuals in society that make up your institutions. Okay, so if your people in your society are not being organized and being actively engaged in a socio-political program to further the constitutional vision, which is a program of social cohesion, and this must happen in multiple ways. It must happen in the cultural arena, it must happen in the language arena, it must happen in the activist arena, it must happen in the rights arena. It's not a it is a multifarious battle, which it was as the national movement showed us. And all of us, our generation, benefited 20, 30 years from that culture of that movement. But when that started eroding, what have we managed to rebuild? Okay, thank you. That is the whole issue. Thank you. Next person, Mohib Saab, you don't have to say anything, right? No. Okay, thank you. So next person is Sohail Ahmed, and after that, Sabia Fatma. Sohail Ahmed Saab, and those would most likely be last questions, or maybe I can add one more. Thank you. Sohail Saab, are you there? If not, Sabia. Yes, sir, I'm here, sir. Okay, go ahead. Go ahead, Sohail Saab. Sir, I have also written a question in the chat box, sir.
Sir, I would like to read it from the chat box. Yeah, go ahead and read it because there are so many questions. Sir, actually, my question was that when the intellectuals from the majority from whom we are expecting to get some kind of support to counter the ideology which is being promoted and perpetuated on us. So I think when they are being forced by acts like UAP or any other actions by the government, and they are being forced to match their voices with the ideology that's being perpetuated. So from where we can expect the support will be come and we can fight this kind of ideology. You see, Suhail, first of all, the intellectuals from the majority community or minority community, that binary is again dangerous. One thing that we must remember that you see that how the lynching was protested in our country and who started the movement, Award Wapsi. All the people coming, those who were protesting and they started the Award Wapsi movement, they all were from, of course, the majority community, the intellectuals. Similarly, for example, Krista is sitting over here. She is an intrepid fighter for human rights, and she is not a Muslim, but she has, faced all kind of hardship because of her activism. So you will find that the people from the different communities, those who want to save the very soul of India, that is diversity, that is, a liberal democratic space, that is unity in diversity. People are trying and they are trying their best. You can say, but what has happened that the political parties, last point that I'm mentioning, you see the political parties, they are basically the secular political parties, they are just political parties. And they are fighting against an organization which is political, which has political organization, cultural organization, social organization, and all kind of organizations. So only a political, political formation cannot, deconstruct the discourse that has been constructed by a formation which has cultural dimension, which has, social dimension, and which has many other dimensions. That is the challenge. Okay, so next person is Sabia Fatma. Sir, am I audible to you? Yes, you are. Okay. Probably not visible. You go ahead. I will put you on spotlight. Okay. Now, sir, actually, my question is, I will be talking about the vulnerability part. I mean, everybody is in all the media. It is going 36 Muslim MLA, 36 Muslim MLA. So much, talk about it, that the number of Muslim MLAs in UP Vidhan Sabha had increased. But I doubt that this will be counterproductive, and Samajwadi Party will distance itself from Muslim community in the Lok Sabha election, because this will work. Now, even now, the situation is this, that even when Muslim wins, that also becomes a problem. That is also a problem, that Muslim is winning. When a Muslim gets a good position in a college, that is also a problem, that Muslim is topper. So this is, no politician has not done this. This is in the society. They will not vote. I mean, there are reports, and I think they are very much correct, that the Dalits have voted BJP so that Samajwadi should not come to power. You talk of Dalit Muslim Ekta, where it is? Dalits are no longer Dalits. They have started identifying themselves as Hindus. They are on the second strata now. They consider themselves, they do all those things which upper caste Hindus do, and they think that they have become that. Madam Fatma, are you giving the post-election analysis, or do you have a question? I'm asking a question, sir, that Muslim today is in such a position that even if he wins, that becomes a problem. That is a problem. I mean, the general public, sir, we people are the people who are working in private sectors, and we are surrounded by Hindus. We listen to their comments. Where is the question? Can you be short? My question is that if the society, it's not the politician, it has gone much, much deeper.
It has come to the society. Okay, so we know that as well, but what you want to say? What is your question? What can be done, sir? Okay. You are talking of bulldozers now. I have seen visuals where a small child, maybe 4 years old child, he was dressed up like Yogi Adityanath, and as a toy, he was given a bulldozer in his hand. And people were, they were happy about it. Okay, got it. Thank you. Yeah. Any solution, Mohib Saab? Quick solution. Sabiha, I always say, and you are very much right, that it is not only othering a particular problem. Rather, a particular community has been criminalized. You see, that has been projected as a criminal, as a criminal community, a community which is a threat to the country, a community which is, hell-bent upon destroying the country. So that is why it is just in the national interest that this particular community should be marginalized. You are very much right. That discourse is there. But if that discourse is there, we have spaces. Of course, we can discuss, deconstruct that discourse. And that is why the social coalition of all the poor sufferers. You see, we talk of atrocities on Dalits, atrocities on Muslims, atrocities on Christians, or atrocities on other OBC communities. But what about atrocities on people who are the system, who are the victims of the system? So that is why the only way to fight against this kind of blatant communal fascist agenda is to bring various communities, especially the poor sufferers, under one banner, and that is the only solution. There is no other solution. Thank you. That was the last question. And Rudranshu, why do you have your hand raised again? Did you ask another question? If not, give back to Razibai. I just had an observation for the UP elections. No election analysis, please, because there are so differing opinions. Unless you have something to really burning. Let him speak. No, since I belong to UP. I know I belong too, but there are so many analysis. Okay, go ahead. Very brief, please. Go ahead. Very brief. And one of my relatives was contesting an election. That is why I know the reality. Okay, go ahead. Mr. Owaisi has done the damage. We cannot leave him scot-free. Okay, fine. Thank you. The 60 seats which had a minor difference, 500, 1,000, Mr. Owaisi had a role to play. That's all I had. Ranchu, this is not, okay, I'm not going to discuss that because I have differing opinion. So, but that's okay because the in post-election analysis is always the spoilers are blamed. So nothing new. Even in the US it happens. So, I know this Owaisi and BSP are blamed for post-election analysis. So I'm not, very much impressed with that impression. But anyway, so I got it, what you are saying. And Razibai, back to you. Okay, quite engaging session. We had a little, bitter experience today, which usually doesn't occur in our events. And we didn't expect this much, but that's probably the strategy of all those people. This was the first time we brought in one person from political party, and we had a taste of it. As far as election analysis, it is true, Rafat, whether we agree or not, but great majority agrees that BSP and OSC did the damage. I do agree with that. I do agree with that. But why to blame them? I do agree with that. But why we are not blaming them? We are just saying. So that everyone knows because everyone here in the forum knows that the vote. I understand. But they were the spoilers. But they have a democratic right. The larger responsibility relies on Samajwadi that they should have been. And let me hear from Fazal Bhai something new. I have read all your comments, all your emails, but if you have something new to say, Fazal Bhai. Okay, the session is over. Those who want to leave, that is fine.
This is an informal discussion now, and thank you everyone for attending the. I just want to say one thing, because I think it's very important that your forum remains proactive on all the issues concerning India. You all need to keep intervening with the authorities, send letters, send communications, because many of you are not here, some of you are here. And I want to just end with a word of caution that I feel there's every likelihood that an All India NPR and NRC will be announced soon on the back of the UP victory, and that's going to create havoc and it will be a huge challenge for the social sector. So please train your eyes and ears on what's happening in India and keep intervening. I'm sorry, I have to leave now. Thank you so much. Thank you so much for your time. It is not going to be very soon. It will take some time because they know how to proceed also. Okay, Fazal bhai. I've expressed my opinion. I've not given a timeline to it, but I think most of our problem is we don't anticipate things enough. Thank you so much. Thank you very much for your time. Thank you. All right. So now it is open chat session. Now it is just a chat session. Please feel free to leave. Yeah. Fazal bhai, bring something new. I have made my comments in chat box. Only thing I was going to say that I think that Madam Fatima alluded to that. It's a lots of hype that lots of Muslims have won seats there in UP. I think that itself is going to create a lots of problems. So exactly. Let's wait and see. There's nothing else actually to add. I think the BJP is going to be even bolder to execute their programs, which they have been waiting for this election. But everything has its end. I would only say that it's a responsibility of majority community to fight. Minority Muslims, they cannot fight alone. Being in India, those who are around, it's very difficult. You saw in Kanpur during NRC and CEA that how shooting was going on innocent Muslims and all those. But anyway, those who are there, they will deal with that. BJP will have its time run out eventually. When? Nobody knows. Yeah. So, Fazal bhai, go ahead, President. एक जो आपने कहा उस पे तो ये फिट होता है ना कि बीजेपी actually wants you to act as communal factor. So, and that is the most damaging thing that you means that you will ever do. रजी भाई यही कह के गई है इल्मी साहिबा कि you are communal, all Muslims are communal. क्या रफत ऐसा है कि why you are bringing इल्मी साहिबा as a devil's advocate? उनकी opinion मतलब So that is already known. And अभी जो आपको दिलीप साहब ने कहा, दिलीप साहब who comes from Dalit community, and he very clearly said and put a prescription before you that rather than capitalizing on established Dalit leader or Muslim leader, these two forces, Muslims as a community, Dalit as a community, unless they join hands and create a real Bahujan Samaj, unless you do that, you cannot become an effective force. But if you remain as a community, just for community's sake, and put that thing, you can win couple of seats in very dense Muslim populated area, but you are going to make non-Muslims more communalized. And you can never achieve your... Razi bhai, this is a process. You should begin all 5 years before the election. ये नहीं है कि 3 महीने पहले आए और election शुरू कर दिया. That's what they all are saying. Can I come in here on an issue of importance was raised but not sufficiently discussed, and that is the reforms within the Muslim community. And here, can I make a comment? Here, Professor Mohibul Haque spoke about the role of the ulama. And correct me if I'm wrong, but to me it appears that the ulama and the Muslim professionals seem to be living on different planets. And I think it is important to build a consensus between those who are the ulama and have, whether we like it or not, mass appeal,
and the professionals who may be in their own cocoons. My question to Mohib Saab, and that's the discussion I thought we should have, how do we create a platform for some exchange of opinions and views between professionals and professors like yourself and the ulama, so that we can come to some sort of a consensus about what needs to change within the community, and how is it going to happen? सर, इस जो आपने अभी बात की उसी सवाल में जवाब भी था कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अल्टीमेटली होता क्या है कि देखिए, जो हमारे उलमा है वो आइडेंटिटी के इश्यूज पे बहुत ज्यादा असर्ट करता है, मिसाल के तौर पर, और उसमें जो असर्शन होता है कभी कभी बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव होता है। जैसे अगर आप पूछें, एक बड़ी तादाद उलमा की आपको वो मिल जाएगी जो इंडिया में जिसे कहते हैं एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, वो एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है और उसको बहुत ही प्रोग्रेसिव सेक्शन जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कुछ अप्रिशिएट करते हैं। 8 साल 9 साल 10 साल की बच्ची की शादी नहीं होनी चाहिए, बट अल्टीमेटली उसको भी अपोज करने वाले बड़ी तादाद में आपको मुस्लिम क्लर्जी के लोग मिल जाए, और अनफॉर्चुनेटली उतनी ही बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और मुस्लिम प्रोफेशनल्स भी मिल जाए। जो अब यहाँ पे जो स्पेस मिलता है कि अगर 10 साल की जगह पे 18 साल की उम्र अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर देती है और बच्ची की शादी के लिए, व्हाई शुड बी अपोज बाय द मुस्लिम कम्युनिटी, मुझे ये समझ में नहीं आता। और अल्टीमेटली इसको जब लेकर के जब हम जिसको सोशल स्पेसेस में जाते हैं तो अल्टीमेटली एक रिएक्शन होता है। हिजाब, बुर्का और नकाब का पूरा जो डिफरेंस है वो समझे बगैर मुसलमानों की बड़ी तादाद ये समझती है कि उनको एग्जामिशन मिलना चाहिए बुर्का पहनने की, जिन स्कूलों और कॉलेजों में यूनिफॉर्म है। बात ये कि वो हिजाब के लिए यानी स्कार्फ के लिए जो स्ट्रगल था उसको बुर्का या नकाब का स्ट्रगल बना दिया गया और अल्टीमेटली उस पर where is the catalyst? नहीं, ऐसा है कि ये पूरा सेशन नहीं हो सकता और इतना लॉन्ग एंड पॉसिबल है। आप लोग एक चीज क्यों नहीं करते, ये मॉडर्न एरा में जहां आपके सर्वाइवल और सारी चीजों का मामला है, वहां आप 10 साल की शादी और नकाब की बात सिर्फ कर रहे हैं, आपको प्रायोरिटी नजर नहीं आती कि कहाँ वी आर रियली लैकिंग, एंड दैट इज द एजुकेशन। व्हाई वी डोंट टॉक अबाउट एजुकेशन, why we talk about कि मैरिज की एज क्या, मौलाना कब आएंगे, what a मौलाना has to do with education thing। आपकी priority में we are all educated people here, why the foremost priority that lacks in us is education। एक चीज से ही हर चीज का लिंक है, अगर आप एजुकेट कर दें तो वो नकाब का मामला भी सॉल्व करेंगे, शादी का मामला भी सॉल्व होगा। why we don't see this as the key issue, and why that's why we lack also educationally at every level in every region, we really lack because our priority कभी भी नहीं एजुकेशन में रही और हमने खुद भी कुछ नहीं किया। ये प्रॉब्लम है ना कि ठीक है नहीं, हम लोग का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। देखिए पूरे उसमें हमारा फोकस में एक भी आदमियों में से एक ने भी ये नहीं कहा कि एजुकेशन, वो हिंदू मुस्लिम किया और शादी की मैरिज की बात की, अलायंस की बात की, एक ने भी ये नहीं कहा कि इनर मोहल्लाज में, सुन लीजिए, इनर मोहल्लाज में इधर उधर हर लेवल पे एजुकेशन कहाँ। Mohib sir, if you please permit me, can I say something? Sure. Sir, I have been, आप जो मुझसे कह रहे हैं ना, मैं जो हूँ ये CAA NRC का जो मूवमेंट हुआ था, मैं शाहीन बाग तक गई हूँ और मैं उसमें एक्टिव थी। यहाँ लखनऊ में ये घंटा घर पे ये होता था। आप जो कह रहे हैं सर, मैं आपको बिल्कुल एक लाइव बात बता रही हूँ। मैं भी यही बात कह रही थी जो आप कह रहे हैं, बीइंग इंटेलेक्चुअल, और मैं ये बात किसी दूसरी साहिबा से कह रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। इस सब की वजह जो है गुर्बत है और लाइल्मी है, हम लोग जो पढ़ा नहीं पाए। एक बहुत ही गरीब तबके की औरत वहां खड़ी हुई थी और वो मुझसे आई और मुझसे लड़ने लगी कि बेटा गरीब ही तो बैठे हैं यहाँ सारे, अनपढ़ ही तो बैठे हैं यहाँ सारे, जिनके बल पे तुम ये पूरा मूवमेंट चला रहे हो। कौन है यहाँ?
तो क्या कहना चाहते और हैं? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर मतलब हम जो अपने को ना इंटेलेक्चुअल समझ के ये कह लेते हैं कि इसका रीजन जो है गरीब लोग हैं, इसके रीजन जो है जाहिल लोग हैं। ये जो नहीं। 36 सर आए हैं ना एमएलए, जिसके लिए हम लोग बहुत अपने पे फक्र कर रहे हैं, ये उनके वोट से आए हैं। सुनिए, आप मेरे ख्याल से तो समझ नहीं रहे ये बात को। नहीं, आप पोलिटिसाइज कर रहे हैं हर चीज को। देखिए, चाहे वो गरीब से वोट्स आए हो, चाहे अमीर जो एजुकेशन का मामला अलग है। नहीं, वो अलग नहीं है। बिल्कुल है। नो नहीं नो नो सर, नो 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 नो, इट इज लिंक्ड। आपके लिंक है। रिलीजन से, आपकी सोशल लाइफ से, आपकी मैरिज से, आपके एम्प्लॉयमेंट से, हर चीज से एजुकेशन इज लिंक्ड। वी आर रजी भाई इसी बात पे, रजी भाई इस बात पे हम आपसे एग्री करते हुए एक चीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ सवाल के तौर पे। रिलीजन को इसमें लाने की कोई जरूरत अच्छा, नहीं। एक बात मैं आपसे, रजी भाई एक बात मैं आपसे, अब आप रिसोर्स पर्सन बन जाए, हम आपसे सुनना चाह रहे हैं। एक बात, मेरा सवाल का जवाब आप दीजिए। हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की पूरी बैकवर्डनेस की बात की जाती है या उनके मार्जिनलाइजेशन की बात की जाती है, तो उसमें एक फैक्टर, सिंगल फैक्टर, हम पढ़े लिखे मुसलमान हमेशा ये कहते हैं कि एजुकेशनली बैकवर्ड। देखिए, अगर एरिस्टोटल से लेकर के मार्क्स तक तमाम बड़े थिंकर्स को देख लीजिए, इंसेंटिव एंड प्रोग्रेस की लॉजिक देखिए। इंसेंटिव और प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि दलित कम्युनिटी में आज की डेट में ये जो एजुकेशन की तरफ इतना बड़ा रुझान है, या ओबीसी कम्युनिटी में एजुकेशन की तरफ इतना बड़ा रुझान है, या एसटी कम्युनिटी में जो एजुकेशन की तरफ जाने का रुझान है, उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है, थैंक्स टू डॉक्टर अम्बेडकर, वो है रिजर्वेशन, स्टेट का अफर्मेटिव एक्शन, जिससे एक्सक्लूड किया गया मुसलमानों को आर्टिकल 9 यानी ऑर्डर 1950 के। अब एक दूसरा फैक्टर देखिए, आप उस कम्युनिटी से कह रहे हैं कि एजुकेशन की तरफ जाओ, जिसने फैज आम कॉलेज, जिसने मुस्लिम डिग्री कॉलेज के नाम से, फैज आम गांधी कॉलेज के नाम से, या थाउजेंड्स ऑफ मदरसाज या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज। आपने कभी सोचा है हिंदुस्तान में कि स्टडी कीजिए कि दलित कम्युनिटी ने एज अ कम्युनिटी हिंदुस्तान में कितनी यूनिवर्सिटी और कितने कॉलेज बनाए? ओबीसी कम्युनिटी, देखिए कंपैरेटिव स्टडी होती है। नहीं, अच्छा मोहित साहब रुक जाइए। वही हुआ ना कि ये वी टॉक इन डिटेल्स ऑन ए स्मॉल प्लेटफॉर्म फॉर ए स्मॉल टाइम। आपने पीछे, इससे पहले भी आपने एक क्वेश्चन इस पर किया था कि मुस्लिम्स ने बहुत एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए, दलितों ने एक नहीं। सुनिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अभी आपका क्वेश्चन, आपने एक बात ये भी एक्सप्रेस की कि हम इंसेंटिव होता है एजुकेशन का, हमारे पास क्या इंसेंटिव है, इसलिए कि रिजर्वेशन है। इससे ज्यादा गलत बात, यानी बहुत ब्लंटली मैं कह रहा हूं, इससे ज्यादा गलत बात कि इंसेंटिव एजुकेशन का आप उस वक्त फील करेंगे जब आपके लिए एक रिजर्व कोटा कहीं होगा। दैट मीन्स देयर इज, ये तो कम्युनिज्म के भी बयान चला गया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एवरीबडी विल बी टेकन केयर ऑफ। दलितों को भी वहां तक जाने के लिए पढ़ना पड़ा। आपका तो पढ़ने का प्रॉब्लम है। प्राइमरी जरा सा डेटा निकालिए, एलिमेंट्री स्कूल, सेकेंडरी स्कूल में जरा डेटा मुस्लिम्स का निकालिए और मुस्लिम्स का पैटर्न देखिए आप। एजुकेशन, किसने आपसे कहा कि आप फैजामी में जाके पढ़िए? आप नॉर्मल स्कूल में पढ़िए। आप देखिए, मुस्लिम एजुकेटेड क्लास के ऊपर उसके शोल्डर पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आया कि वो सिर्फ अपने कैरियर में जिसने पढ़ लिया, अपना नौकरी उसने सिक्योर की और मुड़ के नहीं देखा गरीब तबके की तरफ। और गरीब तबका जब नहीं पढ़ाया जाएगा, उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जज्बा, और कहां जाएगा, खाना उसको खाना है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली बात करता है। लेकिन उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आप जब पढ़ेंगे, यू कैन क्रिएट स्मॉल बिजनेसेस, you can create your institution, you can create publication house, you can create everything। लेकिन जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आपकी डिपेंडेंसी कहीं और होगी, और रिजर्वेशन आपके पास है नहीं, तो आप इसी तरह से भटके फिरेंगे। आप ये बताइए कि एक भी कोई सेंटर, कोई फ्री बच्चों के लिए कोई जगह पूरे यूपी में आप नाम दीजिए, 45 मिलियन मुस्लिम्स रहते हैं, 45 मिलियन मुस्लिम्स उस जगह पे हैं। एक ग्रैंड इंस्टीट्यूशन बना दिया आपने, क्या नया कि इंटीग्रल, उसमें जो पैसा जाता है वो गरीब मुसलमान तो उसको नहीं दे पाए। आपने फ्री इंस्टीट्यूशन कोई भी ऐसा बनाया जो क्वालिटी का हो? क्यों नहीं बनाया? अगर ये क्वेश्चन आता, क्यों नहीं बनाया? अगर गवर्नमेंट आपके साथ नहीं
कोऑपरेट कर रही है, और आपका रिजर्वेशन भी नहीं है। इसलिए कि हम इतने बेवकूफ हैं कि हम कहते हैं इस्लाम एक है, कोई इसमें जात नहीं, जबकि एवरीडे लाइफ में हमारी जात है। कोई छोटा है, कोई है नहीं मानते। तो मान लिया आपने मजबूर है, आप खुद क्यों नहीं अपने पैर पे खड़े होते? अलीगढ़ की बात मैंने इसलिए कही कि वहां पे तो मैं रोज जानता हूं कि वहां क्या होता है। अलीगढ़, जामिया, एल्सवेयर, इधर उधर मुस्लिम्स के पास इतने गरीब भी नहीं है, वो क्यों नहीं कलेक्टिव फंड इकट्ठा करते हैं? उनको क्या गवर्नमेंट गन से लेके मार देगी कि तुम पढ़ रहे हो? ऐसा है क्या? नहीं क्यों नहीं बता रहे भाई? रजी भाई ये कैच 22 है। गो अहेड सर। रजी भाई, आप प्रैक्टिकल डिफिकल्टी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने की और रिकॉग्निशन की, यानी वो भी मत करो, वो भी मत करो, ऐसे से कहीं और इनरोल कर दो, पढ़ो तो। आप अगर फील्ड में आएंगे तो आपको वल्नरेबिलिटीज पता करेंगे, एक्टिविटी में है इस तरह की कलेक्शन करते हैं। I am in the field, that's why I'm saying I am in the field. फंड कलेक्ट करके जो लोग एस्टैब्लिश करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मूवमेंट चल रहे हैं यहाँ पे, और उनको जिन चीजों का बहुत चल रहा है सर, आपका थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है सर। इम्पार है, एएमपी है, ज़कात फाउंडेशन है, परवास फाउंडेशन है सर, मैं खुद चला रही हूँ और कितने बच्चों को पढ़ाया है। जी हम लोग भी यहाँ से चला रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग को मालूम नहीं है। आपके बगल ही में बैठे हुए ये साहब फजल साहब है अलीगढ़ अलुमनाई के, पूछिए इनसे कि कितना पैसा यहाँ हर साल यहाँ से भेजा जाता है। तो ऐसा नहीं कि And results are coming, sir. It's not like that. आप लोग ये बात तो भूल ही जाते हैं कि कितना भी आप कर लीजिए, जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी किसी वो तो एक अलग इश्यू है, वो तो वही इश्यू है। नहीं सर, वो इश्यू है, वो द इश्यू है, वो ही इश्यू है। तो वो इश्यू तो आपकी मजबूरी हो गई ना, मान लिया वो आपकी मजबूरी है, तो अब आप क्या कीजिएगा ये बताइए। अब आप 1-2% को, 3% को, 5%। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ रिवर्स में, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। मैं बताऊं सर आपको, राजीव सर, है ना, यहाँ जहाँ मैं राजस्थान में काम कर रही हूँ, यूपी का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं राजस्थान के मुस्लिम बच्चों की छोटे 0 to एलिमेंट्री एजुकेशन का, हमारी स्कूल के पास ही सरकारी स्कूल है और मुस्लिम बस्ती का स्कूल मुश्किल से 100 मीटर 150 मीटर दूर है, लेकिन वहां हिंदू टीचर जाके पढ़ाना नहीं चाहता। तो वो बेचारे छोटे छोटे से बच्चे जो 10 साल के अंदर के बच्चे हैं, वो यहाँ पढ़ने आते हैं और यहाँ उनकी हालत इतनी बुरी है कि उनको अध्यापक पढ़ाना ही नहीं चाहता। और आप सरकार के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं सर, टीचर को 70-80 हजार रुपया पर मंथ सैलरी मिलती है, वो उसको अनार का आम का ही नहीं पढ़ाता। तो मैं तो 2 मिनट का, मेरे लिए तो 1 सेकंड का रास्ता है वो स्कूल जाने का, तो मैं अक्सर स्कूल जाती हूँ, बच्चों से बात करती हूँ, बेटा कहाँ से आए हो, क्या पढ़ रहे हो, एंड दे ऑल आर मुस्लिम किड्स। कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे हम? क्या मतलब कोई पढ़ाना नहीं चाहता? टीचर, अरे भाई तो मुसलमान टीचर बना के पढ़ाओ, कौन सी बड़ी बात। तो अगर हम तो तैयार है पढ़ाने को, ये और वो जो अध्यापक जो रिक्रूटेड है गवर्नमेंट के थ्रू, वही नहीं पढ़ा रहा। My question is, suppose I am raising a question, governments are totally opposing you, ठीक है, हम मान गए, आपके पास रिजर्वेशन नहीं, हम मान गए। नाउ मुस्लिम कम्युनिटी का अपना फर्ज क्या है ये हम पूछ रहे हैं। अगर मान लिया कोई नहीं पढ़ाना चाहता, कहीं कुछ नहीं है, खुद मुस्लिम कम्युनिटी बार बार क्यों यही चीज करके बच जा रही है कि गवर्नमेंट करेगी तभी होगा। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं कर रही, हम कह रहे गवर्नमेंट नहीं कर रही है, दैट्स इट। हम कह रहे हैं रिजर्वेशन नहीं है। अब आपके पास मुस्लिम कम्युनिटी है, वो अपना क्या कर रही है ये तो दिखाओ कम से कम, वो क्या कर रही है। तो वो भी तो नहीं पढ़ा रहे। एक हमारे नसीम क्या नाम है जो भी सर है, वो भी नहीं पढ़ा रहे ना सर। मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आप रिटायर्ड हो गए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। वही बात है, सुन लो, वही बात है। ये दिलीप साहब जरा आप बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। ये इश्यू है, मुस्लिम मुझसे भागता है, मैं मुसलमान हूँ, बहुत एक्टिविस्ट हूँ, यहां से लेकर के वहां तक, और ये ट्रू है। हम टोटल जो हमारे कंधों पे है, वी आर टोटली इनसेंसिटिव एंड फेल्ड। क्यों? कि हमको आदत हो गई है, रिजर्वेशन नहीं है तो हम क्या करें, या हमारे लिए गवर्नमेंट करे। भी हर चीज में हम पॉलिटिक्स में जाके अपने को सरेंडर कर देते, लेकिन खुद एफर्ट नहीं करते।
रिलीजन को लाते हैं, मुल्ला को लाते हैं। ये बहुत ओवर सिंपलिस्टिक है। अरे भाई अभी सुनिए, एक साहबा ने कहा ना कि हम लोग यहाँ बहुत कर रहे हैं। वी नो कि क्या हम लोग कर रहे हैं वहां, जब भी हम लोग का इतना बुरा हाल हुआ। दलीप साहब आप बताइए क्या है। सर प्लीज सर ऐसे मत कहिए। मैं आई एम नॉट फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट दैट हु विल लिसन टू ऑल दिस। जब हम कर रहे हैं और जब हमने मूवमेंट चलाई है तो मैं कहूंगी कि मैं कर रही हूँ। तो आप बिल्कुल कर रही हैं, बट व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट गुड एनफ। और आप बात कर रहे हैं, आप बताइए आजमगढ़ में शिबली कॉलेज है, बस्ती में खैर इंटर कॉलेज है, ये सब कॉलेजेस हैं और यहाँ से निकले हैं। ऐसा तो नहीं है कि एजुकेशन की बात एजुकेशन से आगे निकल गई है सर। थैंक यू। आई एम फ्रॉम शिबली कॉलेज, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ शिबली स्कूल, शिबली कॉलेज, एंड आई हमारी फैमिली जो उस कॉलेज के अंदर जो है 100 साल से काम कर रही है। सो आई नो ऑल दैट। ओके, सो प्लीज इसका मतलब ये नहीं कि वहां कुछ भी काम नहीं हो रहा, बट ये साल्ट के बराबर काम होने वाली बात है। आप दिलीप साहब बात कीजिए, जो भी बताइए। हमारा प्रॉब्लम आपकी जबान से हम सुनना चाहते, आप कैसे हमको देखते। राजीव साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपने जो पॉइंट रेज करा है एजुकेशन का, वो एक बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन उसके साथ साथ एक जो चीज निकल कर आती है वो नॉलेज की है। वो नॉलेज किस तरीके से कि क्या मैं ये महसूस करता हूं कि मैं जब तक नहीं पढ़ूंगा तो मैं साइकिल में पंचर ही लगाता रहूंगा। ये क्या मैं महसूस करता हूं? क्या ये मेरी कम्युनिटी महसूस करती है कि मेरे को आगे पढ़ना है, लिखना है, आगे चलना है? क्या हम उन किताबों को पढ़ते हैं? हम नहीं पढ़ते। हम ये देखते हैं कि पंचर किस तरीके से हम लगाएंगे जो कि 2 दिन के 4 दिन तक चिपका रहेगा। वेरी वैलिड थिंग। आपने बात करी दलित की, रिजर्वेशन की भी बात आई। ठीक है, रिजर्वेशन था, सब कुछ था, लेकिन आज का जो दलित बच्चा है वो ये कह रहा है आई विल फाइट ऑन द सेम फुटिंग ऑन मेरिट। मेरे को रिजर्वेशन नहीं चाहिए, वो कहता है मेरे को पढ़ाई चाहिए। I want to be a graduate, I want to be a post graduate, I want to be a MBA, I want to be a PhD। वो इस तरफ जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि वो जो नॉलेज जो है, अंदर जो जागृति है, क्या वो आ रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि सब दलितों में आ गई है, लेकिन वो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन मुस्लिम समाज के अंदर वो चीज अभी नहीं है। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में जामा मस्जिद में चले जाइए, आप गाली गलौज और गुल्ली डंडा रहता है। तो क्वेश्चन यह है कि जब तक हमारे हाथों में कलम नहीं आएगा, हम जब तक नहीं महसूस करेंगे वो कलम होना चाहिए, और साथ में एक यूनिटी। आप प्रोफेसर साहब ने ये बोला, एक बड़ा वैलिड पॉइंट बोला कि यूनिटी ऑफ दोज पीपल हु आर ऑप्रेस एंड को सफरर्स। तो हम ये रिजर्वेशन की बात क्यों कर रहे हैं? हमें ये समझना चाहिए कि हम दोनों ही को सफरर्स हैं, हमें मिलकर चलना पड़ेगा। मैं तो ये भी कहता हूं कि एक दलित को मुसलमान को पढ़ाना चाहिए, अगर पढ़ा सकता है तो क्यों नहीं होना चाहिए, एंड वाइस वर्सा। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं आई हैव नॉट बीन एबल टू कंट्रीब्यूट मच, बट आई हैव गॉट ए आदिवासी किड इन माय होम एंड आई एम गिविंग हिम एजुकेशन एंड ही इज गोइंग टू द सेम स्कूल एज आई यूज्ड टू गो। तो मैं ये चाहता हूं कि इस तरीके से 1, 2, 4 को अगर करेंगे तो वो और आगे बढ़ेगी चीज। सो द चेन विल बी देयर, बट आर वी वांटिंग टू मेक द चेन और नॉट? दैट इज द इशू, एंड इट स्टार्ट्स विद एजुकेशन। आई एग्री विद यू राजी जी, एजुकेशन इज फॉर मोस्ट। अगर अंबेडकर ने एजुकेशन नहीं करी होती, क्या होता? नहीं होता। आप ये देखिए, इसमें बुरा किसी को मानने वाले, नथिंग पर्सनल। आप देखिए, आपने रीजन और रैशनल के साथ एक बात की, रैशनलिटी दिखाई। हमारे 2 स्टीम्ड लोग जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने डिफेंसिव होकर बात की, दोनों मुसलमान हैं, कि आप क्यों ऐसे बात कर रहे हैं, इतना हम लोग कर रहे हैं। अरे बाबा, ये तो सबको मालूम है कि आप कहीं कहीं कुछ कर रहे हैं। वाई डोंट यू फील दैट हीट कि इस कंट्री में, जब उसका मतलब इंडिया में, जब यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं और हमारे साथ हैं, तो हमारी कम्युनिटी, क्या आपको अपनी आंख से दिखाई नहीं दे रहा है कि इतने जो आईएएस मुस्लिम रिटायर हुए, उन्होंने क्या लीडरशिप रोल लिया? इतने इंजीनियर से रिटायर होकर बैठे, उन्होंने क्या किया? इतने डॉक्टर्स हर शहर में कहीं न कहीं हैं, वकील हैं, वो क्या कर रहे हैं? हर चीज हम थोड़ी करें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या कर रही।
आखिर कितनों भी खराब हाल हो, मुस्लिम वहां पे रिटायर होके एजुकेटेड क्लास, और जो अभी रिटायर नहीं हुआ वो दिखाई दे रहा है, हर शहर में एक बिजनेस क्लास भी दिखाई दे रहा है। हमने खुद अंडर द सिचुएशन क्या इंसेंटिव है, क्या किया है फजल भाई? Sir, can I intervene? Can I make a small point? अरे फौरन बोल दिया कीजिए भाई। जी जी सर, बात ये है कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं, आई एम सॉरी टू से, आई माइट ऑफेंड द प्रोफेसर्स ऑन द पैनल, वो बहुत ही घटिया लेवल के हैं। वो कोई क्रिटिकल थिंकिंग पैदा ही नहीं कर पाते। द ओनली डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएसए में भी डिक्टेटर बनने की कोशिश की ट्रंप ने, लेकिन वहां की यूनिवर्सिटीज ने उसको रोक दिया। वहां की यूनिवर्सिटीज ने उसको डिक्टेटर नहीं बनने दिया, क्योंकि वहां के मासेस में क्रिटिकल थिंकिंग थी। वहां ट्रंप ने भी मेजॉरिटी अपीजमेंट करने की कोशिश की कि आई विल एस्टेब्लिश व्हाइट सुप्रीमेसी, लेकिन उसके आइडिया को आईवी लीग यूनिवर्सिटीज ने डैमेज कर दिया। हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सिर्फ इतना काम करती हैं कि भैया पढ़ो, नौकरी कर लो, नौकरी लग जाएगी तो शादी हो जाएगी। हमारी जो हम ईस्टर्न सोसाइटीज के लोग हैं, उनकी जिंदगी में दो ही गम होते हैं, नौकरी और शादी, बस। आपको दोनों मिली कि नहीं मिली? मुझे दोनों में से अभी कोई सी भी नहीं मिली हुई है सर। ओके, बराबर के शरीक हैं, लेकिन तो हमारा रिसर्च ओरिएंटेशन नहीं है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, but research is the father of invention. When necessity and research copulate, then inventions are born. How many inventions can be attributed to Hindus or to Muslims? We are living in a world made by Christians. एक माचिस से लेके और हवाई जहाज तक जो बना है दुनिया में, वो क्रिश्चियंस ने बनाया है। दुनिया में कैलेंडर उनका चल रहा है। हमने 1500 साल पहले बनाई थी ना, उसके बाद हम बहुत खुश हो गए थे, फिर सो गए। तो आप सिंह साहब आप कहाँ ले जा रहे हैं इसको? देखिए, शुरुआत जो थी वो एजुकेशन और नॉलेज की बात है। आप किस तरफ चले गए? आप तो दूसरी तरफ चल रहे हैं सिंह साहब। दलीप साहब, बेसिक में तो क्लैरिटी है नहीं, तो फिर कहाँ जाएंगे आप? भाई आप लाइट नोट पे बात कीजिए। फजल भाई आप बताइए कि आखिर हम क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, और करना चाहिए कि नहीं? अब बेकार बातें हैं ये सब। नहीं करना चाहिए। कर रहे हैं तो घर वाले ही निकाल देते हैं सर। आप दलीप साहब यहाँ बैठे हैं, एक दलित को नौकरी दो तो घर वाले कहते हैं तेरे यहाँ तो है ना वो हरिजन आता है, तुम तेरे यहाँ का पानी नहीं पियेंगे। हो गया, चलिए फजल साहब की बात सुन लीजिए। नहीं, मैं I don't agree निधि जी, I don't agree with you. I am facing sir, I am the victim. There may be solitary cases there, but it is not generalized. You cannot generalize that. देखिए, मैं ये कह रहा था कि रजी जो कह रहे हैं, एजुकेशन मस्ट है अंडर व्हाट एवर सर्कमस्टांसेस, और अगर गवर्नमेंट नहीं हेल्प कर रही है तो ठीक है, हम अपना करेंगे जितना कर सकते हैं, जो कुछ लोगों ने कहा कर भी रहे हैं, तो करना चाहिए। लेकिन बहुत सी बाधाएं आती हैं इंडिया में, ऐसे थर्ड वर्ल्ड मुल्क में, गवर्नमेंट के बगैर हेल्प के। लेकिन मैं आखिर में ये कह रहा था कि ये बहुत हो गई, अब लाइट नोट पे बहुत हेवी हो गया। एक हैवी बात मुझे करनी है। कोई भी एजुकेशन जरूरी है जो है, जैसे भी हो। अच्छा, हैवी बात कोई और कर रहा है हमारे सर। एक हैवी बात मुझे करनी थी सर। मैं इंडियन मुस्लिम्स को देख रहा हूँ, वहीं जा रहे हैं जहाँ के अमेरिकन ब्लैक्स 400 साल से इनके खिलाफ इंस्टीट्यूशनलाइज रेसिज्म हो रहा है और वो आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा नहीं है कि यहाँ ब्लैक्स ने कॉलेजेस नहीं खोले ऑन देयर ओन, लेकिन जहां गवर्नमेंट बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दे सर, वो गेटो बन जाते हैं। इंडियन मुस्लिम्स का फ्यूचर बहुत तारीक है। हम प्राइवेटली जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस खोल रहे हैं, कभी वो गवर्नमेंट के हेल्प को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आई सी अ वेरी डार्क फ्यूचर फॉर इंडियन मुस्लिम्स। इसमें बहुत ही डिप्रेसिंग है मामला इस वक्त। चलिए, चलिए हम लोग इतना डिप्रेसिंग नहीं देखते। व्हाट आवर इश्यू इज कि गवर्नमेंट जनरल चीजों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। हाँ, हमारे लिए अलग से प्रोग्राम
प्रॉब्लम्स नहीं है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर आप जाके देखें तो अंडर इसी कांग्रेस की या दूसरी गवर्नमेंट में बहुत सी स्कॉलरशिप्स के ऐसे हैं कि जो चल रही है मुस्लिम्स के लिए गियर्ड है, मुस्लिम और लड़कियों के लिए भी है। हमारा प्रॉब्लम खुद अपनी अवेयरनेस है कि कितने लोगों को, आई टेल यू, इन लखनऊ पीपल आर टेलिंग मी हु आर रनिंग दिस कोचिंग सेंटर्स कि बहुत लोगों को मुस्लिम मोहल्लों में पता ही नहीं कि हमारे यहाँ कितने प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के हैं जो आप अवेल कर सकते हैं, कितनी हेल्प मौजूद है जो आप ले नहीं सकते, इसलिए कि वहां वाकई ये बात है कि एक सर्टेन क्लास को छोड़ के ज्यादातर पढ़ने लिखने का कोई माहौल है ही नहीं, जीरो है। तो ये एक अवेयरनेस को की जिम्मेदारी किस पर है? ये जिम्मेदारी जो एजुकेटेड मुस्लिम क्लास है उसके ऊपर है, जो सोशल एक्टिविस्ट उसको होना मस्ट है, और वो नहीं हो रहा है। आप जहां जाइए दे आर सो, अगर जो वेल ऑफ एजुकेटेड हैं वो दे आर सो, दे हैव नथिंग एल्स टू से, दे जस्ट माइंड देयर ओन लाइफ। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है और इस इश्यू से आप इसको इनकार नहीं कर सकते। ये अवेयरनेस जो आपने कहा दलितों में आई है, वो अवेयरनेस आई पढ़ने की और उनको बराबर बनाने की। हमारे यहाँ खाली बिटरनेस आई है कि हमारे साथ कोई कुछ हो ही नहीं रहा तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करें, क्या फायदा है? रजी भाई, फजलुर रहमान साहब बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि लाइटर नोट पे खत्म होना चाहिए। तो आप तो खैर वहां पे बैठे हुए, किसी का बहुत अच्छा शेर मुझे याद आता है कि मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा तूफा नहीं होता। ये देखिए, हाँ, तो ये आपने देखा ना, ये जो आपने वाली मारी हमारे ऊपर, तो वो सुनिए, वो क्यों, वो लाइटी पे हम कहेंगे, ये अक्सर आता है। और ये बता दूं, अगर रिवर्स पड़ गया तो ये बहुत बार देसी लोगों ने हमारे खुद रिश्तेदारों का कि आप लोगों को क्या मालूम कि वहां से आप बैठ के बड़े आराम से कहते, एंड आई एक्चुअली टेल देम कि मुझे आके शॉक लगता है इंडिया में कि इनफैक्ट इट इज द रिवर्स वे, इट इज द रिवर्स वे। आपने अभी कह दिया ना, ये शेर पढ़ दिया, आपको नहीं मालूम कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जो जामिया हो, जो कहीं भी हो, जो सेंटर्स है मुस्लिम्स के, जितना अवेयरनेस और जितना काम यहाँ बैठ के लोग वहां के बच्चों के लिए कर रहे हैं, वहां इकट्ठा कोई कर ही नहीं रहा। ये तो ये पता नहीं आप कैसे कर रहे हैं। आपने जो कहा ना, ये नहीं, हम यहाँ बैठ के सब का सब हमने इंडिया के बच्चों, गरीब बच्चों के लिए करते हैं, यहाँ फंड रेज करते हैं। वहां तो हमने देखा कोई करता नहीं, एक आपको वहां पे ईडी का डर नहीं है रजी साहब? आपके यहाँ ईडी का आपको डर नहीं है जब आप ये काम कर रहे हैं तो? नहीं है ईडी सर, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। नहीं, आप समझ नहीं रहे, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। मैं एक कमेंट करना चाह रहा था, जो है एक चीज जो दलित की बात आती है, बेचारे दलित इतना पीछे रहे हैं और अभी भी जितना लोग कहते हैं कि वो आगे हैं, वो है नहीं। ये एक मास परसेप्शन फैला दिया गया है ताकि वो हिंदुत्व फोल्ड में आ जाए, जो है उसको पॉलिटिकली किया गया है, जिसके वो शिकार हुए भी हैं। वो इतना आगे बेचारे नहीं गए हैं जितना कि लोगों ने उसको बताया है, जो है दे नीड अ लॉट मोर वर्क। सही बात है। लेकिन मैं देहात से आता हूं, मैं जानता हूं, मेरे मोहल्ले के अगल बगल बहुत से दलित हैं, मैं देखता हूं उनकी क्या पोजीशन है, जो है तो ये मैं कहना चाह रहा हूं, ये पॉलिटिकल वो है। सही आप कह रहे हैं, मैंने भी यही देखा है और ये कोई छिपी बात नहीं है। बस इतना फर्क ये है कि उनको रिजर्वेशन के थ्रू में थोड़ी बहुत चीजें मिली हैं, लेकिन सोशल स्ट्रक्चर ऐसा रखा गया कंट्री में कि अभी उनके पास बहुत से ऐसी चीजें नहीं। आप तो दूसरी फूटिंग पे थे ना, हमारा मसला दूसरा है। आपकी फूटिंग वो नहीं थी, लेकिन आप रिवर्स गियर में गए। ये मसला है कि हमारी फूटिंग तो दलित वाली नहीं थी। अब तो ठीक है, पार्टीशन का थोड़ा इफेक्ट पड़ा, लेकिन ऐसा भी नहीं पड़ा था। आप देखिए, साउथ इंडिया अनटच था, सेंट्रल इंडिया अनटच था, वेस्टर्न इंडिया अनटच था, लेकिन हम रियली रिग्रेसिव उसमें गए हैं वक्त के साथ। बजाय इसके कि हम प्रोग्रेस आगे करते, वी हैव टर्न बैक टू द अदर साइड और डिफेंसिव कंटिन्यूअस है, रादर देन बीइंग एनालिटिकल वी गेट डिफेंसिव इंस्टेंटली कि ये नहीं होता, वो नहीं करते, आप लोग क्या जाने। वी नेवर गो एनालिटिकली।
एनालिटिकली मैं आपको बताऊं कि मैं तकरीबन 10-12 हज़ार पेजेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स पढ़ रहा था कि उसमें जब इंसेंटिव्स की या अफर्मेटिव एक्शन की बात हो रही थी, और उसमें मैं पा रहा था कि बेगम एजाज रसूल, तजम्मुल हुसैन खान वही बातें कर रहे थे जो आप अभी कर रहे हैं रवि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में। मेरे ख्याल से इसको खत्म किया जाए भाई। और डॉक्टर अंबेडकर जो एक बहुत ही ऑर्गेनिक थिंकर थे, डॉक्टर अंबेडकर की इंटरवेंशन हर इंपॉर्टेंट मौके पे देखिएगा, उसमें क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में इतना अच्छा इंटरवेंशन, इतना इन्फॉर्म्ड इंटरवेंशन जब एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल या ऑर्गेनिक लीडर जैसे फाइट करता है। और ऑन ऑल इंपॉर्टेंट ओकेजन, जिसके बारे में प्रोफेसर अब्बास अंसारी साहब का कमेंट मुझे याद आता है कि ऑन ऑल इंपॉर्टेंट ओकेजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, these leaders, our own leaders, they maintained their criminal silence, or the speeches that they were delivering, they were not relevant. देखिए, जब देने की बात होती है, आज अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, हमारे फॉर्मर अनटचेबल जो हमारे जैसे लोग थे, हमारे दलित यानी SC/ST के लोग, ये थैंक्स टू दैट इंटरवेंशन ऑफ डॉक्टर अंबेडकर कि आज किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, डिस्पाइट अनटचेबिलिटी 25% कम से कम आपको जॉब्स मिल जाएंगे, कम से कम 25% हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएगा भाई? यार आप, मैं मोहित साहब एक बात वाकई समझ पा रहा हूं कि वो जो रुद्रांशु ने कहा कि हम लोग स्पेस को ब्रॉड नहीं कर पाते क्या, वो तो तय हो गया ना मेरे भाई, आप तो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, वो तो तय हो गया कि मुस्लिम्स कैटेगराइज किए गए, जिस भी वजह से हिस्टोरिकल ब्लंडर हुआ, जो भी हुआ, वो रिजर्वेशन में नहीं है। ये बात क्यों नहीं आप समझ रहे कि वो रिजर्वेशन में नहीं है? तो जब नहीं है तो उनको पैरिटी में कि जो रिजर्वेशन से उसे मत रखिए, आपकी कंडीशन दूसरी है। अब इस दूसरी कंडीशन में क्यों नहीं वही दिमाग जो आप लगा रहे हैं अंबेडकर साहब तक जाने का, उस दिमाग से क्यों नहीं आप ओपन हो कि ये बात, आप तो मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, मैं कह रहा हूं इस बात की वजह से। अरे मैं ये कह रहा हूं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम इज पॉलिटिकल। नो, इट इज नॉट। नो सर, इट इज सर। हम लोग नहीं, ठीक है, तो मुस्लिम्स को इस चीज से भी निकलना होगा। पॉलिटिकल अवेयरनेस सर, हम लोगों का डेडिकेशन, आप सोचिए, आपके यहाँ दिन है, आप बैठे हैं, रात के 12 बज गए, लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं। अरे वो डेडिकेशन की कमी नहीं है, थैंक यू, डेडिकेशन की कमी नहीं है सर हम लोगों में। वेल सेड, वेल सेड, थैंक यू, वेल सेड भाई। ये लाइटर नोट यही था, सही भाई, मगर प्रॉब्लम, हम फ्रंट लाइन वर्कर हैं सर, हम यहाँ पे गोली खाते हैं। वही तो कह रहे हैं कि थैंक्स फॉर योर डेडिकेशन। वैसे रसी साहब, एक बात हम कहना चाहेंगे, प्रोफेसर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके कमरे में ही AMU में बैठे हुए एक डिस्कशन चल रहा था हम लोगों का, और उसमें हमने उस वक्त 2012 की बात होगी, हमने कहा कि एक नारा दिया जाए, जय भीम जय मीम, जय मीम जय भीम। वो नारे का इतना एतराज हुआ, लेकिन जब ओवैसी साहब देते हैं तब वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर दलित देता है तो नहीं है। तो को सफरर कहाँ बन रहे? भाई बिल्कुल आपने सही कहा, वही सही कहा। दलित नहीं साहब, हम लोग तो, हम और आप तो उस नारे के साथ ही आगे बढ़े थे। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं। वैसे मैडम फातिमा, हम लोग भी बगैर लंच के ही डटे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप ही डेडिकेटेड हैं। यहाँ 1:30 बजे हैं, हम लोग लंच अभी नहीं खाए हैं आपकी वजह से। सर, यहाँ हम आपको बताएं, हम अपने ऑफिस में अगर किसी दिन बहस करके आते हैं ना, तो शाम में आकर के डर जाते हैं कि कहीं ईमेल ना आ जाए कि योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। अच्छा, चलिए, हुआ है, ऐसा हुआ है सर हमारे यहाँ। ओके, ठीक है। हमारे यहाँ एक इंसान की प्राइवेट सेक्टर में नौकरी गई है क्योंकि उसने जो है लिख दिया था कि चेहल्लुम की छुट्टी क्यों नहीं हुई। He was I mean very capable person। अरे भाई, तो प्राइवेट सेक्टर है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए आप क्या कीजिएगा? प्राइवेट सेक्टर की उसने तो उसने गवर्नमेंट को लिख दी। मतलब आप ये सोचिए कि हम लोग इस पर भी, इस तमाम अपने ऊपर डेंजर ले करके भी हम लोग काम करते हैं, बहस करते हैं, लोगों से जाते हैं ग्रास रूट। सर, मेरी भी सोच वही थी जो आपकी है, जब तक मैं ग्रास रूट से मिली नहीं थी। प्रॉब्लम तो हम लोग ड्राइंग रूम डिस्कशन वाले हैं,
प्रॉब्लम ग्रासरूट वाले तो ये बताइए, आप जो बार बार ये लाती हैं तो वो लाइटर में हम लोग जा ही नहीं पाते। आप बहुत सीरियस होकर के आप देखिए, आप कंटिन्यूअस आप एक्यूजेशन वाले बोर्ड में आती हैं कि हम जो करते हैं वो सही कर रहे हैं, आप लोग तो ड्राइंग रूम वाले हैं। आपको कैसे मालूम? आप नहीं, हम लोग आप लोग नहीं, हम लोग, मैं आई इंक्लूड माई सेल्फ इन दैट। क्यों ड्राइंग रूम वाले हैं? क्यों ड्राइंग रूम वाले हैं? क्योंकि हमें नहीं पता, हम लोग बहुत सारी चीजें प्री कंसीव नोशन से समझते हैं, विच इज नॉट द रियलिटी। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, क्यों आप सबको इंक्लूड इसमें कर रहे हैं? ये क्यों आप कह रहे हैं कि सारे लोग यहाँ जो बैठे हैं ड्राइंग रूम डिस्कशन वाले लोग हैं? आपको कैसे मालूम कि ये लोग क्या क्या करते होंगे? सर, ये जो बात हम कह रहे हैं ना, हम जब कोई बात कही जाती है तो सिंबॉलिक कही जाती है, वो आपको नहीं कही जा रही है। नहीं, आप नहीं समझ रहे। मेरे कहने मतलब आप मुझको नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको जब ये वर्ड कहती हैं तो आपको कैसे मालूम कि इस पे जो 90 लोग थे, 100 लोग बैठे थे, इसमें कौन लोग क्या क्या करते रहे होंगे या कितनी चीजों में इन्वॉल्व है? तो फिर आपको भी नहीं मालूम ना, आप भी तो वहां बैठ के कह रहे हैं कि यहाँ नहीं करते हम लोग। मुझको इसलिए मालूम है कि मैं ये फोरम चला रहा हूं, तो इस पे जितने लोग थे ऑलमोस्ट सभी को मैं जानता हूँ कि कौन लोग हैं। ये फर्क था मेरे और आप में, मुझे मालूम है। हम जानते हैं आपको, रजी भाई, हम जानते हैं आपको, आपका इन्वॉल्वमेंट भी जो यहाँ पे है। ये फर्क मैं बता रहा हूँ उन साहबा को कि हमको इसलिए मालूम है कि अगर वो 400 को हम ही लिस्ट भेजते कि वो कौन लोग हैं, कहाँ इन्वॉल्व हैं, कितना लैग करता है और क्या करना है, तो ऐसे ही नहीं ये 1:30 बजे भूखे फजल भाई बैठे हुए हैं, हम भी भूखे बैठे हुए, और ये अभी उठेंगे, अगले हफ्ते की तैयारी करेंगे। तो डेडिकेशन तो है, फूड फॉर थॉट भी तो है यहाँ पे। फूड फॉर थॉट ही नहीं। और ये भी बता दे कि ये एक बात हम बता रहे हैं आपको, ये सही है, जितना ओवरसीज में आकर के इंडियंस, चाहे वो जिस कम्युनिटी का है, वो इंडिया के लिए काम करता है, पैसा जमा करने में, उसके लिए लॉबी करने में, वो जब वो वापस जाता तो उसे शॉक लगता कि यार उसी के रिलेटिव्स के कजिन्स ये तो खाली ठाट की लाइफ कर रहे हैं, इन्हें किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इनका। That's what मैं एग्री करती हूँ राजी सर की बात। Absolutely right, absolutely right, रजी भाई, absolutely right. I mean, I really get shocked. और ये नहीं मानता है। मैं देखिए, मैं आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। आजमगढ़ से लेके अलीगढ़, दिल्ली का मेरा एक ही रूट रहा है 40 साल से। एवरी चीज मैं जानता हूँ, डेली बेसिस पे मैं एंगेजमेंट मेरा है, मुझे मालूम है कि कितने लोग वहां क्या करते हैं उसमें, और यहाँ पे क्या करते हैं, और क्यों यहाँ पे इतना वो अननेसेसरी। अब कोई कहे कि हम तो बड़े ठाट से रह सकते हैं, हमें क्या पड़ी हुई यार, हम तो अब सिटीजन भी नहीं, आराम से कर देंगे, क्या सब तमाशा किए हुए। वाई वी आर डूइंग ऑल दैट? ये कोई बैठ के मजा लेना है तो हम यहीं पे मजा ना ले लें, आप लोगों के साथ क्या मजा लेना? तो दैट लॉजिक डजंट फिट। वी आर वेरी एक्टिविस्ट हियर, ऑल एनआरआईज, मोस्ट ऑफ देम जो एक्टिविस्ट हैं वो बहुत इंगेज है, और सब इंडिया की गियर्ड है, सब इंडिया के ऊपर। सर, this is the difference. उसके लिए दुआ कर दीजिए कि रुद्रांशु की 2 प्रॉब्लम है वो दोनों खत्म हो जाए जल्द से जल्द। This is the difference. I did my LLM from Canada. तो मैं भी पहले हार्ड जो राइट विंग विचारधारा है उसको बड़ा पसंद तो नहीं करता था, लेकिन एक्सेप्ट करता था। उस राइट विंग थिंकिंग को चैलेंज करने की जो कुव्वत मेरे अंदर आई, वो कनाडा से LLM करने के बाद ही आई। वो हिंदुस्तान में पढ़ के नहीं आ पा रही। अगर लेकिन ना एक बात समझिए, कोई तो बात होगी ना कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट को विदेश में पढ़े हुए लोगों ने ही क्यों लीड किया। अरे भाई, तो ये दिलीप साहब बैठे हुए हैं, वो दिलीप साहब आपकी बात नहीं मानेंगे। दिलीप साहब तो वहीं की प्रोडक्ट हैं, वो तो वहां पे भी लिबरल हैं। तो और मुस्लिम्स को ये समझना भी छोड़ना होगा कि डिस्क्रिमिनेशन या खतरा खाली उन्हीं के ऊपर है। मैंने अभी चैट बॉक्स में एक पूरा राइट अप जो मैंने खुद लिखा है, छोटा सा एक पैराग्राफ, वो प्रोफेसर साहब को भेजा भी है। इवन द जाट्स आर बिकमिंग पावरलेस, systematically they have been made powerless by the BJP. The state of Haryana, which always used to have a Jat chief minister, no longer has a Jat chief minister. There is no Jat cabinet minister. आप कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं डिस्कशन को? आप बहुत कहाँ से कहाँ डिस्कशन ले जा रहे हैं? बात जो हो रही है उस पर फोकस रखिए। अरे भाई, तो ये क्या कह रही हैं आप? क्यों आ गई बीच में इंटरव्यू करने? क्या कहना चाहती हैं आप?
हम ये डिस्कशन को कहना मैं कहीं चाहते नहीं हैं ले कि जा रहा तुमने हूँ जो बात डिस्कशन कही को। है वो ये नहीं नहीं, है प्लीज कि हमें प्लीज हियर मी आउट। अपनी मदद आप करनी चाहिए। देखिए ये बात सही है। प्लीज हियर मी आउट। ऑल आई वांट सिंह जैसे साहब, आपने सिंह बार साहब, बार इस सिंह चीज को साहब, कहा एक बात कि हमें समझिए। खुद करनी चाहिए। all I wanted to say is right wing ideology is based on bigotry and it has to create division. Yeah, no doubt about it, no doubt about it. At the moment it is creating division between बिल्कुल, Hindus and the होगी बात, Muslims. बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। जब ये किस्सा सेटल हो जाएगा तो वो चैप्टर नंबर 2 शुरू होगा, वो होगा दलित वर्सेस सवर्ण। फिर चैप्टर नंबर 3 कुछ और आएगा। Chapter 1 is near completion, sir. I tell you, it is near completion. वो रुकती नहीं है कहीं भी। And chapter number 4 will be capitalists versus the poor people. ये जो इलेक्शन हुआ है ये लाइट नोट पे नहीं जा रहा है, लाइट नोट पे बिल्कुल नहीं जा रहा है, मुस्तकिल सीरियस नोट की तरफ वापस आ रहे हैं लोग। तो देखिए सिंह साहब, मुद्दे की जो बात है, मुद्दे की बात यह है सिंह साहब, मैं प्लीज समझिए, मुद्दे की बात यह है कि आज सिचुएशन ये है, राइट और लेफ्ट की बात नहीं आ रही, आज सिचुएशन आ रही है कि संविधान को कैसे बचाया जाए, बात वहां पर आ रही है। मुद्दा वो है असली, और वो जो है उसको मुस्लिम और दलित समाज मिलकर ही बचा सकता है, और कोई नहीं बचाएगा। ये भी समझ लीजिए इस बात को। जो सिंह साहब पोखर में स्विमिंग सीखता है उसे पता है पोखर क्या है। जी ये बात तो है। और उसके लिए ये बात बड़ी ऊंची, और उसके लिए पार्टी सिस्टम भी चाहिए सर। अरे भाई उसमें भैंस भी डालनी चाहिए। देखिए आप लोग पार्टी सिस्टम चाहिए। अरे भाई प्लीज लाइट हो जाइए, इतना हेवी क्यों लेते हैं अपने सर पे, कुछ देर के लिए लाइट हो जाइए। मैं ये कह रहा था दिलीप साहब की पोखरे में 2-4 भैंस भी डाल दीजिए और देखिए कि उसमें भैंस के रहते हुए आप कैसे तैरते हैं। रियली भैंस से टकरा गए तो क्या होगा, अगर आप सोचिए कि पोखरे में भैंस से अगर आप टकरा गए तो कैसे क्या होगा। वो भैंस के ऊपर भी हम कैनाल में बैठे हैं, लेकिन अब जितने भैंस और भैंसे हैं वो तो सारे जो है उसमें घूम रहे हैं, फार्म्स में। तो ये देखिए ये घूम रहे हैं तो वो मिल ही नहीं रहे अब। ये इश्यू बहुत सही है। आप सोचिए कि पोखरे में भैंस का होना भी जरूरी है और तैरना भी जरूरी है, कैसे होगा ये। नहीं, ऑन द लाइटर नोट आई वुड से, राजी साहब, ऑन द लाइटर नोट आई वुड से कि देखिए जो एफ्लुएंट लोग हैं दोनों कम्युनिटीज में, अगर वो ये सोच लें 2-2, 4-4 बच्चों को हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि उनको एजुकेट करें, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएं और उनको हर चीज से अवगत करवाएं जी, तो बहुत बड़ा हम समाज के लिए काम कर सकते हैं। नो डाउट अबाउट इट। दिस इज व्हाट द एंड में आपने बहुत सही बात की, और ये सबको समझ है लेकिन लोग करते नहीं। प्रॉब्लम यही है, सब जानते हैं ये करना चाहिए। तो दिलीप साहब आपकी ईमेल तो मेरे पास होगी, आई एम श्योर। मैंने आपको एक मैसेज भी भेजा था। कब? और वो मैसेज यही था जो हमने प्रोफेसर साहब को भी भेजा था कि हमें क्या चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए या बहुजन राष्ट्र चाहिए, डू वी वांट अ राइटस नेशन और वी वांट अ मेजोरिटेरियन नेशन। तो प्रोफेसर साहब तो कुछ नहीं बोले होंगे, हमने भी कुछ नहीं कहा। नहीं प्रोफेसर साहब बोलते हैं, लेकिन वो मैं ये सोच रहा था वो आज के फोरम में बोलेंगे कुछ। अरे भाई वो बहुत सीरियस बात फिर हो जाएगी, आप लाइटर ही पे रहने दीजिए। वो फिर नहीं, वो लाइट तो एजुकेशन की कर ही ली ना बात, हमने पोखर की भी कर ली लाइट। हाँ नहीं, पोखर में जब भैंस पोखर में इंटर हुई है वही लाइटर मूवमेंट था, आई थिंक। चलिए भाई हो गया, अब थक गए रियली। थैंक यू। अगले हफ्ते के लिए आइए, अगले हफ्ते कुछ और फिर बातें होंगी। दिलीप साहब शामिल होइएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, ऑल द बेस्ट। अच्छा डिस्कशन। हैव अ नाइस लंच सर। अच्छा लंच अब बचा कहा है, कुछ होगा तो खा लेंगे। चले प्रोफेसर साहब आदाब। वैसे रजी वो जो आपने पैम्फलेट ब्रोश्योर इसमें दिखाया था जिसमें स्पीकर्स की तस्वीर थी और आपकी भी थी, आपकी तस्वीर बड़ी आंकड़ी हुई थी, जो है वो उसको जरा सा ढीला कर दें जो है। तो वो आंकड़ जब थी तब थी, अब थोड़ी रहेगी, अब तो ढीले हो गए भाई। वो आज से हमारे पास अपनी तस्वीर ही नहीं रहती है, 15 साल 10 साल पुरानी थी तो वो लगा दी कि भाई डाई अब भी लगाते तब भी लगाते थे, फर्क असली रंग तो हमारा देखा नहीं किसी ने। तो
इसी लाइटर नोट के साथ आप खत्म करते हैं। तो वो हाँ, अकड़ तो कहाँ रह गई, अब खत्म हो गई। तो शादी से पहले की तस्वीर राजीव साहब आपकी बातों में बहुत दम है, दम बहुत दम है। बहुत है। आप अच्छा, आप जब घर जाइएगा तो सोचिएगा कि भाई पोखरे तक तो आप आए, लेकिन भैंस हमने डाली थी पोखरे में। गंदी है आजकल तो सर। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। अच्छा भाई, थैंक यू ऑल, थैंक यू, फिर मिलेंगे। ओके, खुदा हाफिज। Good. Thank